Hi, my name is Amit Singh and I'm a senior mentor at MBA. We are a CAT training institute based in Patna. Now, discussing this good question, a very good question. This question is from Modulus. The question says that find the minimum value of x plus 7 mod plus mod of x plus 3 plus mod of x minus 4, where x is a real number. Now, there are two ways to solve this question. One is the algebraic method, which is the conventional one, and the other method is where we make use of the graph. We plot the numbers and try to find out what this mod of x plus 7 means, what x plus 3 mod means, and then try to figure out what will be the minimum value. So we'll look at the second method, which is more fun way of solving this question. So let us solve it through graph by drawing diagram of the this corresponding to the modulus. All right. So let's say this is my number line. Okay. This is my number line. Okay. So you have 0 here. So through this question we are also trying to understand, trying to learn a beautiful concept of plotting these expressions, mod of x plus 3, mod of x plus 4, mod of x minus 4, mod of x plus 3 on a number line. So what does this mean on a number line? That is what we are going to take away from this question. So let us plot the numbers here. Say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and up to infinity. Similarly, this side minus 1, minus 2, minus 3 up to minus infinity. So this is my number line. Now let us talk about x minus 4. X minus 4. Okay, x minus 4. Now let's say x is equal to 1. If x is equal to 1, the value will be 3. 1 minus 4 is minus 3. Minus 3 का mod क्या होगा? 3 होगा. So if x is equal to 2, the value will be 2 minus 4 minus 2. Minus 2 का mod 2 हो जाएगा. If x is equal to 3, 3 minus 4 minus 1. Minus 1 का mod क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. Okay. So what are we now seeing here? If you take x is equal to 1, the value is coming out to be 3. You can take it as this way. If you are taking x is equal to 1, this is nothing but distance between 1 and 4. The distance between 1 and 4 is 3 unit. So this distance is mod of 1 minus 4. Mod of 1 minus 4. If you are taking x as 2, the value is coming out to be 2. So distance between 2 and 4 is 2 unit. So this is mod of 2 minus 4. Similarly, if you are taking x as 3, the value is coming out to be 1. So x is equal to 3 ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस बता रहा है. So this is mod of 3 minus 4. And this holds true for all the x. So you can say mod of x minus 4 is distance of x from 4. From 4. Now similarly, if you take say mod of x plus 3, instead of taking minus 4, now we are taking plus 3, mod of x plus 3. Now let us take some different numbers. If you take x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to minus 1, and see what it is coming out to be. If you take x is equal to 1, this will give you 4. If you take x is equal to 2, this will give you 5. If you take x is equal to minus 1, so minus 1 plus 3 is 2. 2 का mod 2 होगा. Now x is equal to 1, say 4 आया है. This 4 is nothing but distance from minus 3 to 1. Okay, this is mod of 1 plus 3. This is 4 unit. Similarly, if you are taking x is equal to 2, it is coming out to be 5. So 5 कैसे आ रहा है? ये x is equal to 2 से, from here, this one, x is equal to 2 से x is equal to minus 3 के बीच का distance. This is 2 plus 3, 5 unit mod आ रहा है. If you are taking x is equal to minus 1, the distance is coming out to be 3. So this is nothing but distance between minus 1 plus 3. Right? So we can generalize x plus 3 का mod क्या है? Distance of x from x is equal to from minus 3. From minus 3.
-3 से x का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, mod of x plus 3 on a number line, right? So we're getting some good idea here. The concept is that mod of x minus a is distance of x from a, distance of x from a, and mod of x plus a is distance of x from, so this is not capital, make it small, and distance of x from x is equal to minus a, right? So a से x का distance mod of x minus a, minus a से a का x का distance mod of x plus a. So this is the basic idea. तो यहाँ जो तीन मॉडुलस है, x plus 7 is nothing but distance of x from -7, x plus 3 is distance of x from -3, x minus 4 is distance of x from 4. इन तीनों डिस्टेंसेस का सम किस x पे होगा, that is what we have to find out. I hope you are getting the idea. Now once you have understood the meaning of x plus mod, x plus some number का mod या x minus some number का mod, now we can attempt this question graphically. Okay, so let us delete this first. Delete this first, and then we'll solve this question. Now see here, draw another number line. Lot, say this is 0. You have x plus 7. The question says x plus 7. So plot x is equal to -7 here. -7 somewhere here. X plus 3. So plot x is equal to -3. And x minus 4. So plot x is equal to 4. Right? Now, look at these two extremes. -7 and +4. If you take any x in between, say you take x here, you take your x here, so this distance is mod of x plus 7, and this distance is mod of x minus 4. You are taking extreme points. The extreme points are -7 and +4. If you take x somewhere in between these two extreme points, you'll always find x plus 7 का mod is distance from x, distance of x from -7, and x minus 4 is distance of x from 4. तो इन दोनों का सम हमेशा सेम होगा ना, -7 से x, -7 से x और x से 4. तो इसका मतलब हुआ ये टोटल मिला के कितना हो गया, 7 इधर और 4 इधर, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स. So I can say these two will always add up to 11 if I am selecting x between -7 and 4. आपने यहाँ x लिया, इसके जगह आप यहाँ पे x लेते. Suppose you take x here, you take your x here, then this distance becomes your mod of x minus 4, and this whole distance becomes mod of x plus 7, और इन दोनों का सम फिर से कितना आता, 11 यूनिट ही आता, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. So if I take x between -7 and 4, the sum of mod of x plus 7 and mod of x minus 4 will always give me 11. ठीक है. But if you take x beyond this, जैसे if I take, say this is -7, this is 0, this is -3, this is 0, this is 4. If I take x beyond these two extreme points, -7 और 4 के बाहर लेते हैं अगर हम लोग, सपोज हमने x यहाँ ले लिया, if this is my x, then ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, mod of x minus 4, और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा mod of x plus 7. और आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 11 से ज्यादा हो रहा है, बिकॉज x से -7 का डिस्टेंस ही 11 से ज्यादा है और ये डिस्टेंस एडिशनल हो रहा है, तो दिस इज एडिंग अप टू बी मोर देन 11, राइट. You have selected your x here. See, this distance is mod of x plus 7, and this distance is mod of x minus 4. तो यहां से यहां का डिस्टेंस ही 11 से ज्यादा है ना, बिकॉज 4 से -7 का डिस्टेंस 11, x से
-7 का डिस्टेंस 11 से ज्यादा है और प्लस ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11 से ज्यादा हो जाएगा. Means that if I am selecting x between -7 and 4, mod of x plus 7 plus mod of x minus 4 is giving me 11. But if I select my x beyond these 2 points -7 and 4, यानी 4 से ज्यादा ले ले x या -7 से कम ले ले, तो mod of x plus 7 plus mod of x minus 4 will exceed 11, right? So हम कह सकते हैं कि इन दोनों का sum, can say that mod of x plus 7 plus mod of x minus 4, इन दोनों का मिनिमम will be 11 at any point between -7 and 4. If I take a point beyond 4 or beyond -7, my sum will be more than 11. So इन दोनों का तो मिनिमम मिल गया, किसका? x plus 7 और x minus 4. अब किसका बच रहा है? x is equal to minus x plus 3 का. तो x plus 3 है क्या? x से minus 3 का distance. x plus 3 is distance of x from minus 3. So I also know that x plus 3 का minimum will be 0 at x is equal to -3. x is equal to -3 लेंगे तो -3 plus 3 0. ऐसे भी देख सकते हैं -3 से -3 का डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा. सो आई नो, और -3 कहाँ लाई करता है? -3 लाइज बिटवीन -7 एंड +4, इनके बीच में ही लाई करता है. सो इफ आई टेक x is equal to -3, x is equal to -3, तो ये डिस्टेंस हो गया मॉड ऑफ x plus 7 और ये डिस्टेंस हो गया मॉड ऑफ x minus 4. और चूंकि हमने x का वैल्यू -7 और 4 के बीच में लिया है, तो इन दोनों का सम तो 11 आएगा और वो मिनिमम है, और x plus 3 -3 पे 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका मिनिमम कितना होगा? 11 होगा. सो वी कैन से मिनिमम वैल्यू is 11. 11 plus 0 is 11. So the minimum value of this number is 11. Beautiful question if you solve it algebraically. Now that you have understood this question, इस क्वेश्चन को आपको हर बार इतना कुछ समझना नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया. बट वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेट अस consolidate the concept here. The concept is like this. See, deleting this. The concept is like this. See, this corresponds to distance of x from -7. This corresponds to distance of x from -3. This corresponds to distance of x from 4. You plot these three numbers. -7 plus 4 -3. Minimum will always be at a central point. So minimum कहाँ पे आएगा? -3 पे आएगा. So you can straight away say minimum will be -3 plus 7 -3 plus 3. x का वैल्यू -3 डाल दीजिए, -4. So this will give you 4, this will give you 0, this will give you 7. 7 plus 4, 11 is the minimum, and that occurs at x is equal to -3. Right? Very simple. यहीं पे अगर सपोज ऐसा रहता, mod of x plus 7 plus mod of x plus 3 plus mod of x minus 4 plus mod of x minus 5, सपोज ये क्वेश्चन रहता 4 का, तो हम क्या करते? चारों को प्लॉट कर लेते. This corresponds to distance of x from -7. This is distance of x from -3. This is distance of x from 4. This is distance of x from 5. अब इन दोनों का सम x plus 7 का मॉड और x plus 5 का सम का मॉड का मिनिमम कब आएगा? जब हम पॉइंट लेंगे -7 और 5 के बीच में. और x plus 3 का मॉड और x minus 4 का मॉड का मिनिमम आएगा जब हम पॉइंट लेंगे किसके बीच में? -3 और 4 के बीच में. So you take any point between which is between -7 and 5 as well as between -3 and 4. So -3 और 4 के बीच में भी हो और -7 और 5 के बीच में भी हो, तो यानी कि हम कहाँ लेंगे? बीच का कोई पॉइंट ले लेंगे. तो -3 और 4 के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये मिनिमम आ जाएगा, और मिनिमम होगा कितना? मिनिमम आप डाल लीजिए, x is equal to put x is equal to 0. x is equal to 0 lies between -3 and 4. So -3 और 0 डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 plus 3 plus 4 plus 5. So 10 plus 9. Minimum is how much? 19. So 19 is the answer. यानी कि जब odd number of terms है, जैसे 3 टर्म है तो बीच वाला पॉइंट पे ही आएगा क्या? मिनिमम. जब 4 पॉइंट हो जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा है
तो 4 पॉइंट हो रहा है, तो जो बीच बीच का जो रेंज है, दिस रेंज, बीच वाला रेंज, दिस रेंज, इसी रेंज में कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा। और जब ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा तो जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसी पे मिनिमम आएगा। जब इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा तो जो बीच का रेंज होगा वहां पे मिनिमम आएगा। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट था तो सेंट्रल पॉइंट इज -3, तो मिनिमम कहाँ पे अकर करेगा, -3 पे। यहाँ 4 पॉइंट है तो मिनिमम कहाँ पे अकर करेगा, ये बीच वाले रेंज पे अकर करेगा। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बीच के रेंज में मिनिमम आएगा। यहाँ पे बीच के पॉइंट पे मिनिमम आएगा। तो जब 5 पॉइंट होगा तो बीच वाला पॉइंट पे मिनिमम आएगा। जब 6 पॉइंट्स हो जाएंगे तो बीच वाले रेंज पे मिनिमम आएगा। वेरी सिंपल। वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, the question becomes over simplistic. I hope you have learned from this question. This question has given you some new concept. Thank you guys. Thank you for watching.